A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Hello viewers, today we are going to talk about moral development and psychosocial development of child. And specifically we are to talk about moral development and its component as moral behavior and moral concept. First of all, we'll to talk about moral behavior. Behavior means the combination of different actions we adopt for the others, and sometimes we adopt for ourselves, and we to make our child that how to adopt that moral behavior and moral combination of actions. These are the actions which are having conformity with the norms of the group. उस सोसाइटी के अंदर या उस फैमिली के अंदर जो लोग रहते हैं वो किन बातों को तस्दीक करते हैं कि वो अच्छी हैं, और वो जेस्चर्स के लिहाज से, वो अल्फाज के एतबार से, वो रिएक्शन के एतबार से, हाउ दे आर रिएक्टिंग टूवर्ड्स that particular child. Specifically, we'll talk about moral manners, how to talk about, how to live, how to reflect to the others, or sometime soft reflections and hard reflections. Both soft reflections mean कि हम सच बोलते हुए ऑनर महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम कभी कभी उसमें यह है कि वो झूठ बोल देते हैं. दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म ऑफ द ग्रुप. ओके, दैट इज़ मॉरलिटी. हम उसको महसूस करें कि ये ठीक नहीं है, चाहे हम वो मज़ाक में कर रहे हों, चाहे हम वो इन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हों. दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. दैट इज़ मॉरलिटी, दैट वी आर नॉट गिविंग द रॉन्ग ग्लिम्पसेस. सेम लाइक it is accustomed to show the true behavior, actual behavior, what it is in actual, and how the folk ways is adopting sort of manners. लोग किस तरह से उन बातों को करते हैं, लेते हैं और शो करते हैं. Truthfulness is accepted. Okay, that's the moral behavior, moral action. Same like if we talk about that there are certain social standards, how we to interact with other people, how we to interact with other things, how we to see. Whatever we are seeing, we are same reflecting, or rather we are enjoying, we are really reflecting. If we are not enjoying, we are truly speaking. हम किसी के मुंह पर उसकी तारीफ करने के लिए हम अपने ज़ाती तसरात को नहीं बदलते. इट्स मॉरलिटी दैट वी आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग हार्श वर्ड्स. ओके, वी आर यूजिंग द हार्श वर्ड्स, बट it is not acceptable for others. So whatever the real reflections are, it's the morality. Anyhow, whatever the harsh words are being used for, not is the situation as good as it is. तो हम उसको कहते हैं कि ये उसके लिए हम सॉफ्ट वर्ड अगर इख्तियार करें, that is also the morality. We'll see here feelings of responsibility is another way that we to respond accurately. Accuracy is the good measure of judging a person, how that person is adopting the manner. तो with responsibility किसी बात को कहना, उसकी responsibility कबूल करना. Yes, whatever I am saying, I am truly speaking, I am reflecting. किसी को वक्त बताना, दुरुस्त बताना, किसी को रास्ता बताना, दुरुस्त बताना, with full responsibility. It's morality. And we'll see here this moral behavior involved
primary consideration to how to reflect, what the primary reflections are for the welfare of others. We have already talked about कि हम किसी के लिए बेहतर सोचते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं और उसको ठीक रास्ता बताते हैं, या फिर हम कहते हैं कि रास्ता ख़राब है, इस रास्ते को मत इख्तियार करें. तो वी आर थिंकिंग अबाउट, वी आर शोइंग reflections to the other persons for the betterment of the others, for the welfare of the others. Same like we would like to gain personal gain. हम अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरों को प्रेफर कर रहे हैं, दूसरों को उससे फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं. तो दिस वन इज़ द secondary importance we are managing. Moral concepts are that how we are seeing the rules of behavior, how to live, how to adopt those rules in our life. जब भी हम बात करेंगे, हम दुरुस्त बात करेंगे, दूसरों तक जो बात पहुंचाएंगे, हमें कंफर्म है तो हम वो बात पहुंचाएंगे. If we are not confirmed, then we are not transforming, we to confirm it. और हम बात को फ़ौरन फैला देंगे, नहीं, हम पहले उसको कंफर्म करेंगे. और दिस वन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस वन इज़ द कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट ऑफ morality, that rather we to spread the wrong news, the wrong application of that will harm others and society members will get annoyed, और उसके लिए तकलीफ दे हो सकता है. हम उसको कैसे रोक सकते हैं? हमारे कल्चर में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको प्रेफर किया जाता है, अगर वो दुरुस्त हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, दैट्स गुड. वी टू थिंक दैट दिस वन इज़ द थिंकिंग हाउ टू प्रोसीड. एंड सेम लाइक वी टू थिंक अबाउट द ऑल पार्टनर्स ऑफ द ग्रुप. तमाम मेंबर्स के लिए हमें सोचना है और सब के लिए सोचना है. दिस वन इज़ द moral concept. Thank you very much.